हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमेशा की तरह बड़ा ही मजेदार। तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। बेहतरीन स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर। मैं ये बात नहीं कर रहा कि एक आम सा बंदा जिसने 4 किताबें पढ़ ली हैं और उसको लेके आया जाए, नहीं। रिसर्च स्कॉलर्स को लाएंगे हम यहाँ पे, जिन्होंने रिसर्च की है, बुक्स लिखी हैं, डॉक्टरेट की डिग्रीज ली हैं, एमफिल्स किए हैं, पीएचडीज की हैं, इस टाइप के जो मेजर स्कॉलर बंदे हैं, और उनको हम लेके आए और उनको इंट्रोड्यूस करें इंडिया में, बिकॉज ये चीज इंडिया पाकिस्तान में अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। विद दैट बीइंग सेड, उस सीरीज का आज पहला लाइव स्ट्रीम है। मैं पहले ये सोच रहा था कि इस लाइव स्ट्रीम में जैसे जैसे जे स्मिथ साहब बोलते जाएं, मैं उनकी साथ साथ ट्रांसलेशन करता जाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि इंग्लिश नहीं जानते वो बिल्कुल बोर ना हो जाएं। मैं आज जब वो अपना एक सेक्शन कंप्लीट करेंगे, जब वो मेरे साथ मौजूद हैं, उस वक्त साथ ही मैं उनकी करंट प्रेजेंटेशन की एक समरी दे दूंगा। हम साथ साथ वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। जब वो एक पैसेज पूरा कर देंगे, एक स्क्रीन पूरी कर देंगे, तो मैं उसकी समरी बता दूंगा, ताकि लोगों को वर्ड बाय वर्ड भी इसी जगह पे, इसी लोकेशन में, इसी स्ट्रीम में मिल जाए। क्या कहते हैं आप? नहीं, बहुत जबरदस्त आइडिया है क्योंकि तो क्या होता है कि अगर हम तो स्टेटमेंट के बाद, हर स्टेटमेंट के बाद अगर उसको ट्रांसलेट करने जाए तो फिर वो सामने वाले का फ्लो भी टूट जाता है। तो ये जरूरी है कि पहले उनको पूरा अपना जो मुद्दा है वो रख लेने दिया जाए और बीच में समरी दे के उसके बाद फिर प्रॉपरली इसको ट्रांसलेट हम कर देंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच साहिल भाई। सबसे पहले फाइनली वी हैव आवर चीफ गेस्ट टुडे, और हम अपने चीफ गेस्ट का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करेंगे। सो एवरीवन इन द लाइव चैट, रिमेंबर, जैसा कि आप लोगों ने भी मुझे बताया था, और बल्कि आप लोगों ने मुझे बताया था और मैं भी इनको फर्स्ट टाइम देख के बड़ा हैरान हुआ था। तो लेट अस वेलकम आवर favorite doctor, not Dr. Zakir Naik. We have our favorite doctor here today with us, Dr. J. Smith. Welcome, sir. Good to be here. How are you? I am doing very well, sir. How are you? Well, I had to run back to my old studio. My new studio does not have internet and it crashed this morning. So just got in, slapped up, put in the router. And so it looks like we're working on it. The fact that you can hear me and can see me suggests that we are working finally. Absolutely, absolutely. So, Dr. J. Smith, I was speaking with my audience here. Most of them are Urdu and Hindi speaking audience. Yet, what I said that Dr. J. Smith will have limited time, so I will not do line by line translation, and I will do line by line translation later. Rather, I will give you a summary after one subject, one page of your presentation in a short manner, and I will do the live line by line translation later, so that we will get the maximum amount of data out of you in this I can do line presentation. by line. I'm used to that. Yeah, I know, but like I want to extract everything out of you in the shortest possible time. So All this right. is the first time you are coming in Indian channel, right, sir? First time with you. That's correct. Awesome. So you have been here before. Oh, well, I've been in other Indian channels, but not yours. Perfect, perfect. Thank you so very much for being here. Let me just tell you again, I have told everyone in multiple videos of mine, and I will now translate that part in both languages. मैंने जब इस्लाम को छोड़ने के लिए, यानी छोड़ा था, यानी जब मैं उसकी स्टेजेस से गुजर रहा था इस्लाम छोड़ने की, तो जो आखिरी रॉक था जिसके ऊपर मैं खड़ा हुआ था वो था कुरान। और वो जो कुरान था, मैं कह रहा था कि ये तो सत्य है, ये तो सही है, ये कभी खराब नहीं हो सकता, इसमें कोई मसला नहीं है। मोहम्मद में कभी मसला नहीं है, आले मोहम्मद में मसला नहीं है, सहाबी अकराम अशरा मुबशरा में मसला नहीं है, इसको हम कभी नहीं तोड़ सकते। तो डॉक्टर जे स्मिथ की एक वीडियो जो मैं कई दफा पहले बता चुका हूं, वो एक डिबेट मेरे हाथ आई, और वो डिबेट थी क्लासिकल डिबेट बिटवीन जे स्मिथ एंड शाबिर अली।
वो मैंने आप लोगों को कई दफा बताया है। इवन जब कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ता है, मुर्तिद बनता है, मेरे ही चैनल पे, यहाँ पे या साहिल के चैनल पे, मैं उसे एंड में क्या कहता हूँ कि अब अगर कुरान के ऊपर फिर भी तुम्हें थोड़ा सा यकीन है ना, तो ये डिबेट देखो। वो डिबेट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन इन रियलिटी मुझे इस्लाम छोड़ने के लिए। नाउ लेट मी ट्रांसलेट दैट इन इंग्लिश फॉर जे स्मिथ। I, डॉक्टर जे स्मिथ, I understood what you said. oh, you know Hindi as I well? I can pick it up. I've lived there for 17 years. I knew what you said. You talked about my debate with Shabir Ali, and that was with the final coffin, nail in the coffin for you. Brother, you are so good. And That's what I was telling Adam yesterday. Adam, I told you, right? He might be Yes. knowing Hindi. Yeah, he, So, like I how are said, you? Nice to meet you. Yeah, thank you, Dr. J. Smith. It's our pleasure to have you on our show. We'd love to meet face to face. I've met Adam, but I've not met you yet. So I can't wait. Great to get together. Sure. Maybe someday. all right. So, doctor, the mic is yours, the camera is yours, and every time a Muslim comes in and he almost left Islam, you know what he says? But Quran, and you know where I send him? To your video. Classical debate between Jay Smith and Shabir Ali. So today I think we can start because a lot of my audience and Sahil's audience, like I'm from Pakistan, Sahil is from India. We are both ex-Muslims, and we mostly work together. Like almost every stream of ours, we are with each other. He is with me, I'm with him. So it's like two countries coming into the same channel always. And now we have 2,500 live viewers already. Viewers, please share. Let's make it to 5,000, 6,000 today. All So right. now, Jay Smith, the mic is yours, camera is yours. Present and carry on. So it's Sahil. Nice to meet you, Sahil, and also Adam. Listen, Same here. I am from India as well. I was born in India. My father was born in India. My grandparents' graves are in India. Both my parents' graves are in India. My family has been in India since 1913. So over 100 years we have been in India. So we know India. We are familiar. I don't speak Hindi. I can understand it, listen to it, and hear what you're saying, but don't ask me to repeat it. Now, I have grown up in India because of that. I have grown up with Muslims all around me. I have had roommates who are Muslims. I've had classmates who are Muslims. And always I'm hearing the same refrain from all my Muslim friends, and that is that the Quran is the eternal word of God, that the Quran was sent down in its entirety to a man named Muhammad between 610 and 632, that the Quran was finalized in its final form, this form right here, at the time of 652 with the Caliph Uthman. And that since that time, since 652, this book has not changed, not one word, not one letter. That's what I've heard. That's what you've heard. And that's what you can go ahead and we'll start from there as an introductory. परफेक्ट. सो जे स्मिथ बता रहे हैं कि 1930 से उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स यानी ग्रैंड दादा वगैरह यहाँ ग्रैंड दादा ग्रैंड मामा यहाँ पे रहते थे. उनकी भी कब्रें इंडिया के अंदर हैं, उनके पेरेंट्स की भी कब्रें इंडिया के अंदर हैं, और वो 17 साल इंडिया के अंदर रहे हैं. हिंदी वो समझ सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं. वो कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों के दरमियान में पला बढ़ा, और मुसलमानों के दरमियान पलते भरते जो मेजर चीज मैंने सुनी वो हमेशा ये सुनी कि जो कुरान जो उन्होंने हाथ में उठा के दिखाया था कि कुछ भी चीज गलत हो सकती है, सब कुछ गलत हो सकता है, हजारों चीजें गलत हो सकती हैं, लेकिन जो एक चीज है जो कभी गलत नहीं हो सकती, जो कभी नहीं बदली, जो हमेशा सही है, वो ये कुरान है. अबू बकर गलत हो सकता है, हदीस गलत हो सकती है, कुछ भी हो सकती है गलत, लेकिन ये जो कुरान है कभी नहीं बदला, ये कभी चेंज नहीं हुआ, और ये कभी बदल नहीं सकता, और इसमें कोई गलती नहीं है. जय स्मिथ. Well, I then moved to England in London, and I was there from 1992 to 2017, so 25 years. And I would go down to a place called Speaker's Corner every Sunday, get up on a small kitchen ladder and take on hundreds of Muslims at a time every Sunday. It only exists on Sundays. And of course, over and over again, I would get hit with the same claims: eternal, sent down, complete, unchanged. Those four words: eternal, sent down, complete, unchanged. Now, I kept on saying, well, hold on a minute. I can't confront eternality. I can't confront sent down because I'm not in the 7th century. But complete and unchanged, those two I can confront. Perfect. So, जे स्मिथ कहते हैं कि जब वो इंडिया से बाहर निकले, लंदन में आए, वहां पे स्पीकर्स कॉर्नर पे जाके वो बातें करते थे, तो लोग जो मुसलमान बताते थे इनको, वो ये 3 बातें बताते होते थे कि कुरान जो इटर्नल है, यानी कि डिवाइन है, हमेशा से था,
हमेशा रहेगा। दूसरा वो बताते हैं कि वो सेंट डाउन है। सेंट डाउन मीन्स कि अल्लाह ने रिवील किया है, नाजिल किया है, ऊपर से आया, फरिश्ता लेके आया। और कंप्लीट है यानी कि मुकम्मल है, अनचेंज्ड है यानी उस पर कोई चेंज नहीं आई। तो जेसमित बता रहे हैं कि जनाब इटर्नल और सेंट डाउन यानी कि जो हमेशा है और हमेशा रहेगा, और सेंट डाउन जो ऊपर से आया है, ये दो चीजें कभी भी आप इसके ऊपर डिबेट नहीं कर सकते। ना तो मैं 7वीं सेंचुरी में था, ना जेसमित 10वीं सेंचुरी में थे कि वो इस चीज को कंफर्म कर सकें। इसको कोई कंफर्म नहीं कर सकता। लेकिन जो बाकी की दो बातें हैं कि ये मुकम्मल है और ये अनचेंज है यानी इसमें कभी कोई तब्दीली नहीं हुई, इन दो चीजों को वेरीफाई किया जा सकता है हिस्टोरिकल एविडेंसेस के थ्रू। उसके ऊपर जे स्मिथ ने अपनी रिसर्च शुरू की और वो हमें बताएंगे। जी डॉक्टर। So what was happening is I was at Speaker's Corner every Sunday, and many Muslim scholars would come to Speaker's Corner. We always had a second ladder. I would be on one ladder, they would be on the second one, and we would have what we call impromptu debates. They would go for 5 minutes, I would go for 5 minutes, and back and forth, maybe for an hour. And we were finding that we were winning every one of those debates because of the material that we were getting. We were getting so much good material, and much of it they had never heard before. Well, this happened up until 1995, when a well-known Muslim scholar named Dr. Jamal Badawi came on his way from Malaysia back to Canada. He was flying through, stopped in London, and his disciples in Britain challenged me to debate with him. That debate took place in 1995 in Cambridge University on August 29th. August 29. So डॉक्टर जे स्मिथ सिंह कह रहे हैं कि मैं स्पीकर कॉर्नर में जाता था और वहां पे इम्प्रॉम्प्टू हमारी डिबेट होती थी। अचानक मैं अपनी एक लैडर लेके जाता था, स्टेप लैडर पे लोग खड़े हुए थे ताकि 3 स्टेप ऊपर हो जाएं वो। मैं अपनी स्टेप लैडर लेके जाता था, मुसलमान अपनी स्टेप लैडर लेके जाते थे और उस पर खड़े होकर हम डिस्कशंस और डिबेट्स करते थे एक दूसरे के साथ इम्प्रॉम्प्टू। वहां पे 1995 में एक डॉक्टर जमाल बदावी, एक स्कॉलर है, मौलाना है, मुफ्ती है, उसके ठुल्ले वहां पे आए और उसके ठुल्लों ने डॉक्टर जे स्मिथ को डिबेट का दावत दी जमाल बदावी के साथ। और वो फाइनली डिबेट उनकी हुई अगस्त 29। विच ईयर सर? आई फॉरगॉट द ईयर। 1995. 1995। सो इन 1995 अगस्त 29 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम उस मुफ्ती के साथ, बदावी के साथ डॉक्टर जे स्मिथ की डिबेट हुई, जो कि एक एंगल चेंजिंग डिबेट थी। यस जी। So that was my very first debate I'd ever done for 2 hours, and I gave 10 historical challenges at that debate. The one that was the most troubling was this idea that we couldn't find any historical material for a place called Mecca at all, and that we could not find any Quran from the 7th century that supported this notion that there was a complete Quran in 652 sent to 5 cities and left there as the canons or as the standards for all Qurans. We couldn't find them. And of course, Dr. Jamal Badawi, his response to me was, listen, Dr. Smith, well, I didn't have a doctorate then. He said, Mr. Smith, he says, you're just arguing from silence. And the absence of evidence doesn't prove the evidence of absence, which was very correct. I didn't have anything to show him. I had no evidence. There was no evidence. That's all my argument was on. He says, that's a very weak argument. Their evidence will come. We may not have it now, but it will come. Just you wait for both Muhammad and Mecca and also for the Quran in the 7th century. परफेक्ट। सो ये पहली डिबेट थी डॉक्टर जे स्मिथ की। फर्स्ट टाइम इन्होंने 2 घंटे की डिबेट की ऑन स्टेज। इससे पहले इन्होंने डिबेट नहीं की थी। उस वक्त इनके पास डॉक्टरेट डिग्री भी नहीं थी। वहां पे उन्होंने 10 पॉइंट्स प्रेजेंट किए थे अपने। उनमें से जो मेजर पॉइंट था, जो जिसके ऊपर इन्होंने बाद में रिसर्च वगैरह की, वो ये था कि कोई भी चीज, कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस, कोई भी मैप, कोई भी ऐसी चीज मक्का के बारे में हमें नहीं मिलती 7th सेंचुरी की। नन, जीरो, नाडा। और उसके अलावा कोई भी आपको कुरान मुकम्मल तौर पे नहीं मिलता 7वीं सदी की किसी भी दिहाई के अंदर। नाउ इस चीज को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन डॉक्टर बदावी ने कहा कि ये बड़ा वीक आर्ग्यूमेंट है। वीक आर्ग्यूमेंट क्यों है? क्यों वीक आर्ग्यूमेंट है? क्योंकि ये कहता है आर्ग्यूमेंट ऑफ साइलेंस, यानी कि ये एक स्टेटमेंट जो इन्होंने बोली कि किसी चीज के एविडेंस का ना होना उसका ना होना साबित नहीं करता। सो ये एक स्टेटमेंट है, दी
हैविंग नो एविडेंस, ये स्टेटमेंट होती है, ये एक बहुत ज्यादा कॉमनली बोली जाती है फिलोसफी के अंदर, अगर आप लोगों ने देखा हो कि एविडेंस का ना होना उस चीज के ना होने को 100% साबित नहीं कर सकता, वो एक वीक आर्ग्यूमेंट बन जाता है। तो उस आर्ग्यूमेंट की बेस के ऊपर बदावी ने अपने आप को स्टैंड खड़ा किया और फिर जे स्मिथ साहब आगे निकले। यस सर। So that was 1995. Let's jump to 2014. 2014, so we're just talking about 9 years ago. I was challenged to another debate. Now I've had many intermediate debates between them, especially with with other people like Adnan Rashid. I had debates with Muhammad Hijab. I'd had debates with Mansoor Ahmad. These are all well known on the internet. I had also made debates with Ali, Yusuf Ali, not Yusuf Ali. It is Yusuf Ali. You're right. And Yusuf Ali, which is like a Salafi kind of a Muslim, right? Yeah, but the one Yusuf Ali is a translator, right? No, not the translator. I'm sorry. What's his name? The one that's in isn't it funny? I can't remember his name right off the top of my head. Anyways, we'll come to him. Okay. So we were having this debate, and this is what's fascinating. We were having these debates at Speaker's Corner, but I had nothing to really show them. I had nothing to look at. I had no manuscripts to look at until 2014. And something happened in 2014. That's where I love it. So, डॉक्टर जे स्मिथ कह रहे हैं कि आफ्टर 1995 से लेकर 2014 के दरमियान में इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ स्पीकर कॉर्नर्स पे डिबेट की और बहुत सारी बातें रखी, लेकिन कोई चीज इनके हाथ में नहीं थी जिसको प्रेजेंट कर सकते, जिसको दिखा सकते। इन्होंने अदनान रशीद के साथ डिबेट की, वेस्ट का बहुत बड़ा बोंगा स्कॉलर है, मंसूर अहमद के साथ डिबेट की, मोहम्मद हिजाब के साथ डिबेट की, यासिर कादी के साथ तो नहीं की थी, दूसरे यासिर के साथ की थी। और उस यासिर की वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई हुई है जिसने बताया था कि ज़ईफ हदीस भी इज अ गुड हदीस, क्योंकि वो 47% से लेके 85% तक की अथॉरिटी के अंदर है। वो वाले यासिर की बात कर रहे हैं प्रॉब्लली, क्योंकि मैंने इनकी ये वाली डिस्कशन देखी हुई है उसके साथ। सो एनीहाउ, डॉक्टर जे स्मिथ ने बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ स्पीकर्स कॉर्नर पे डिस्कशन एंड डिबेट्स की, जो कि आपको मुख्तलिफ जगहों पे इनकी मिल जाएंगी। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन उन तमाम डिबेट्स और डिस्कशन के अंदर डॉक्टर साहब के पास अभी तक कोई दिखाने के लिए, एब्सोल्युटली मुंह पे दिखाने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं थी। बाय द वे, डॉक्टर साहब का चैनल नीचे मेरी स्क्रॉल में चल रहा है, पी फेंडर फिल्म्स के नाम से है। अगर किसी ने जाना है, सब्सक्राइब करना है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन ऑफ माय वीडियो के अंदर भी लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कर सकता है, अदरवाइज स्क्रॉल पे चल रहा है। यस डॉक्टर। In 2014, it's not that I bumped into him, but I got to know a man named Dr. Dan Brubaker. Dr. Dan Brubaker had just got his doctorate, done a 800, actually, but I don't know how many pages, but it was about 1,000-page doctoral thesis, and he sent it to me. And in that thesis, he had gone to the six earliest Quranic manuscripts, mushafs. These are the six well-known and designated as the six earliest, and they include the Topkapi, which is the one that is in Istanbul. They include the Ma'il, which is the one that is in London at the bibliothèque. No, that's the one in the Ridback Gallery there in the British Museum. They include the Petropolitanus, which is the one in Paris. They include also the Husseini manuscript, which is the one in Egypt. The Samarkand manuscript, which is the one in Tashkent, Uzbekistan, and most importantly, the Sana'a manuscript, which is the one in Yemen. Those six. Those are. Can you want me to repeat them, or can you do that? Turp copy. वहां पे इन्होंने तुर्क कॉपी का मैन्यूस्क्रिप्ट को, लेट मी जस्ट ट्रांसलेट सो दैट आई विल रिपीट। सो डॉक्टर डैन ब्रूबेकर ने अपना डॉक्टरेट का थीसिस किया हुआ था, जो उन्होंने थीसिस डॉक्टर जे स्मिथ को भेजा, और उस थीसिस के अंदर कोई 1000 से ज्यादा सफ़ों के अंदर जो उन्होंने जिन मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ कुरान को वेरीफाई और चेक किया था, उसमें एक तुर्क कॉपी थी जो कि टर्की के म्यूजियम में पड़ी है। माहिल मैन्यूस्क्रिप्ट था, which you have as well. This is the top copy right here. Awesome. And then we had Mahil copy, जो कि ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ी है, पेट्रोपॉलिटन कॉपी जो कि पेरिस के म्यूजियम में पड़ी है, समरकंद की awesome पेट्रोपॉलिटन जो कि पेरिस में पड़ी है, समरकंद, where is Samarkand placed? Which museum Samarkand has? This is the Ma'il one here. Here's the one from the British Library. Awesome. Okay. And you know, I'm going to do some amazing stuff with this, as you know. So we'll do some presentation on your stream as well, because people need to know. And then what copy is in Egypt? Then we have the Husseini in Cairo in Egypt, and then the Sana in Yemen. And Sana in Yemen. Petropolitanus in Paris, Samarkand in Tashkent, the Ma'il in London, and then of course the top. All right.
We have 6 copies, 6 earliest copies. Perfect. These are the 6 earliest ones, and they are by far the ones that everybody should be looking at, but no one had looked at them. No one had done any forensic critical analysis of them until Dr. Dan Brubaker did. Awesome. और इन तमाम कुरानिक कॉपीज के ऊपर लोगों को क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए था और इनकी टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म करना चाहिए था, लेकिन किसी डंगर ने नहीं किया था कभी भी. सबसे पहले डॉक्टर डैन ब्रूबेकर ने किया. 2 Turkish scholars this is the book they had written. They did a survey of the 6 major manuscripts from 2002 up to 2007, that 5-year period. ओके ये टर्किश मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर 2002 से लेके 2005 के अंदर 7 के अंदर 5 साल 2 टर्किश लोगों ने इसके ऊपर काम किया था, इसकी टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म के ऊपर. एडम मेरे को लग रहा है कि ट्रांसलेशन बाद में करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें काफी टाइम चला जाएगा. आई थिंक पीपल मतलब कमेंट्स में भी आ रहा है. That'll be fine. I can stay on. So here is the English translation for it. What they're finding here. And what is the name of this book? This is called the Al-Musaf al-Sharif, attributed to Uthman bin Affan. So this is attributed to the 3rd Caliph Uthman. Perfect. Al-Musaf al-Sharif. Perfect. So this was the book that had been written. It was their research over 5 years. It was finally published in 2007 in Turkish, but was not published into English, and I didn't get a hold of it until 2014. So the same time that Dan Brubaker's doctoral thesis came to public notice, this book also was then introduced so that we could read it in English, and you can read it as well. awesome. So 2014 में इस बुक की फाइनल इंग्लिश ट्रांसलेशन आई थी, हालांकि पब्लिश हुई थी टर्किश जुबान के अंदर 2007 में. Yes, brother. So immediately I challenged Dr. Shabir Ali. I don't know if you know Dr. Shabir Ali, considered probably to be the Muslim world's best debater in the English language. Now, to be fair, there is no other language that debates are happening. So in English is the only language where these debates are happening. So he would be their best debater. डॉक्टर शाबिर अली वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एक जमाने के अंदर, आजकल डॉक्टर शाबिर अली को लोग थूकते भी नहीं है, चपेड़ भी नहीं मारते, लेकिन एक जमाना था जिस वक्त डॉक्टर शाबिर अली को लोग मानते थे. 9 किताबें उसने पब्लिश की थी अपनी पीएचडी के बाद, 9 बुक्स जो उसने पब्लिश की थी. उसके अलावा डिबेट्स करने में वो बहुत चीता था और स्टेज पे आके डिबेट्स करता था. अहमद दिदात के बाद इंग्लिश डिबेट्स में सबसे ज्यादा नाम कमाया है शाबिर अली ने. एंड लेट मी टेल यू ऑल, मैं शाबिर अली को बहुत ज्यादा पसंद करता था, मानता था, और इसी वजह से जब शाबिर अली ने डॉक्टर जे स्मिथ के सामने कुत्तों वाली मार खाई, I was like, that guy is done. Yes, sir. So we had 5 debates prior to 2014, none of which I did very well. But this one I challenged him to because I wanted to look at these manuscripts. He said, we're going to debate the Bible versus the Quran. I said, listen, you can debate the Bible all you want. I'm not going to sit there and defend it. I'm just going to debate the Quran. It's up to you what you want to do. So he arrived at the debate in August with the intention of debating Bible versus Quran, the manuscript evidence. And I said, listen, everybody knows about the biblical manuscript evidence. We don't make these 4 claims. We've never said the Bible is eternal. We never said it was sent down. We've never said it was complete. And we've never said it's unchanged. We don't make those 4 claims about the Bible. You are the ones who make that about the Quran. So we're going to debate those 4 claims against your Quran. And for the next 2 hours, he did not have any idea of what I was talking about. Awesome. So Dr. ये बहुत important point है. Wow. Listen very carefully everyone. आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें. थैंक यू सो मच. मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में.